Students, welcome in PG live class. So, dear students, chapter 20. The title of this chapter is Beginning of Settled Life. Beginning life. Now, dear students, this now first is life of an early man. Second, invention from together and made a raft to carry good across the river. Now, students, dear students, many, you know, they of animal skins or with the help of leaves, trees leaves. They use trees leaves and skin of animals to cover their body because they don't know how to make a clothes. They move one place to another place by walk because they also don't know. They also don't know about means they are good because they don't know how they cover their body with the help of skins animals and with the leaves because they also don't know how to make a cloth. Jungle and years ago, heavy loads in long years ago. But slowly some changes are come in the life of the early men. They make a raft. They make a raft. They make a raft, but how? How they can get the idea to make? Early men noticed one day. Early men noticed that to on the surface in the life. जाते इसके बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं, वो अपने बॉडी को कवर करते थे, कुछ भी मिल उनको में भी क्या किया तो वो लोग उस पर राउंड पीस ऑफ लॉग pieces. They found that these pieces could be easily rolled with a slight push. Slowly, the round logs were fused into the same size pieces, and thus the ring was invented. Now, slowly, early men make a raft, and after them, early men also make a cart. They can also make a cart. They can join. Early men, they don't know about the weight. The logs of trees. Attached in these type of vehicle, you can say. Make a like the sledge was very easy, but the sledge were very easily to move on a smooth area because no wheel in this part. So in the smooth area, in the smooth surface, they can move very easily, but very difficult, they cannot move on the rough places. On the rough place, it is very difficult to move.
In the smooth place sledge, it was moved very easily, but on the rough place, it is very difficult to move. Now one day Oldieman saw a log of wood. One day Oldieman saw a log of wood rolling down from the top of the mountain. Then Oldieman noticed that the wood rolled very easily on the surface of a mountain. He fixed a round of a piece. They discovered the wheel. Oldieman राफ्ट बनाया, ऑर्लीमैन ने स्लेज बनाया। ऑर्लीमैन ने लॉग्स ट्रीज के जो ब्रांचेस वगैरह थे उन सबको कनेक्ट करके जोड़ करके एक स्लेज बनाया। स्लेज एक गाड़ी थी जिसमें पहियों का यूज़ नहीं होता था, उसमें पहिए नहीं होते थे, उनको स्लेज कहा जाता। कार्ट विदाउट अ व्हील, इट इज़ नोन एज अ स्लेज। वो स्लेज होती थी, वो स्मूथ सरफेस पे प्लेन एरिया पे तो बहुत अच्छे से चलती थी, लेकिन जहाँ कहीं ऊबड़ खाबड़ होता था क्योंकि उसमें पहिया नहीं होता था तो उसको चलाने में बहुत कठिनाई होती थी। तो एक बार ऑर्लीमैन ने देखा उनको एक आइडिया, तो उन्होंने उसको देखा रोल वेरी इजीली ऑन द सरफेस ऑफ द माउंटेन and he understood that the round object, after that the Oldieman understood that the round object easily roll on the ground, and now in this way they get the idea to make a wheel. उन्होंने देखा कि माउंटेन के ऊपर से एक लकड़ी का गट्ठर जो है बहुत आराम से फिसलता लुढ़कता चला रहा है। तब उन्होंने उसको देखा तो उनको ये लगा कि उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी गोल चीज़ होगी तो बहुत आसानी से रोल करेगी ज़मीन पर, बहुत आसानी से लुढ़केगी। उन्होंने उसको देख करके उनके दिमाग में पहिया बनाने का, उनके दिमाग में व्हील बनाने का आइडिया आया और उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर लेके उसको जोड़ा और इस तरह से उन्होंने एक नए they get an idea, and after that they fixed a round piece of log into under the, उससे उनको एक आइडिया मिला और उन्होंने क्या किया, उसको देखकर ही उन्होंने लकड़ी के बड़े गट्ठर से गोल गोल पीस लकड़ी के काटे और उसे जो है स्लेज में जोड़ दिया। अब क्या हो गई, अब उस स्लेज में पहिया जुड़ गया। अब वो गाड़ी जो है वो आसानी से किसी भी रास्ते पे जो है, चाहे वो स्मूथ हो चाहे रफ हो, दे कैन मूव वेरी इजीली। सो इन दिस वे द ऑर्लीमैन डिस्कवर द व्हील। Now they joined two round pieces of log with a long stake. They attached it to the sledge and made a cart. The progress was very fast. After the invention of wheel, new shapes were given to the wheel. They learned to use wheel in various types of vehicles. Now then the invention, they discovered the wheel. Oldieman discovered the wheel. Oldieman invented the wheel, and now invention of the wheel was a major revolution. In Oldieman's life. It makes transportation very easy, much easier to him. He could travel long distance very easily. Why? They can travel long distance very easily because they discovered the wheel, and these wheels are used in the sledge, and then they can use the cart also. So with the help of these carts, they can move one place to another place very easily. They also send the goods from one place to another place with the help of this cart. So it makes the Oldieman's life very easily. Some major revolution you can see. जब ने इन्वेंशन की, व्हील की इन्वेंशन की, पहिए की खोज की, तो इससे आदि मानव के जीवन में बहुत, वो गाड़ी बन गई, कार्ट बन गया। अब उसमें वो किसी भी जानवरों सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बहुत इजीली भेज पाते थे। तो व्हील डिस्कवर करने के बाद, व्हील का इन्वेंशन करने के बाद से बहुत बड़ा चेंज जो है। और क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स easily, they are used in windmills, they are used in merry-go-round. It is used for making pottery. Even today potter wheel is used to make clay pot. Today they are used varieties of wheel of plastic, wood, steel, rubber, etc. used in toys, watch, machines and vehicles. Now Oldieman discovered the wheels. For example, wheel are used in the windmills also, from the wheel also. Potter, they can use the wheel
They can use the wheel. With the help of wheel they can make the earthen pots, earthen lamp. All these things are made by the potter with the help of wheels only. And the wheels used to drawing of water, drawing underground water. You can say wheel is also used to draw water from the well. So there are so many uses, there are so many works are done with the help of wheels only. And now in the present time there are different varieties, there are different types of wheels are found in the market. Help of rubber, early man invention, the wheel they can be found in the market. Different varieties of wheels are found in the market. Wheels are made with the to make different types of items. Wheels are used in toys also. You play with toys. So you have seen some wheels are also used in your car, bike. Toys means different types of toys are available in the market. So in the toys also wheels are used there. In watches, in watch also wheels are used there. In machines wheels are used there. In different type of vehicles wheels are used there. So these are some uses of wheels. Wheels के बहुत से यूज है. अर्ली मैन ने व्हील्स की डिस्कवरी कर दी. तो व्हील जो है, पहिया जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, या इसके बहुत से यूजेस है. इसके द्वारा क्या हो जाता है, विंड मिल चलता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी, कुएं में से आपको पानी निकालना हो उसके लिए भी व्हील का यूज होता है. आपने पॉटर यानी कुम्हार, पॉटर मीन्स कुम्हार को देखा होगा, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है. कैसे बनाता है, विद द हेल्प ऑफ व्हील ओनली. विद द हेल्प दे कैन यूज अ व्हील टू मेक अ earthen lamp, to make earthen pots. वो जो मिट्टी के जो भी बर्तन बनाता है उसके लिए पहिए की ज़रूरत होती है, व्हील की ज़रूरत होती है. तो इस तरह से पहियों के बहुत से यूजेस है. आज मार्केट में जो है different टाइप्स के व्हील्स देखने को मिलते हैं. कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ स्टील्स के होते हैं, कुछ रबड़ के होते हैं. इनका यूज़ भी बहुत होता है. वॉच में आपने कभी देखा होगा छोटे व्हील्स आपके वॉच में भी लगे होते हैं. टॉयज़ होते हैं उसमें व्हील लगे होते हैं, प्लास्टिक के, रबड़ के व्हील्स यूज़ किए गए होते हैं. इसके अलावा मशीन्स होती हैं उसमें व्हील का यूज़ होता है. वैकल्स होती है उसमें व्हील्स का यूज़ होता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ व्हील. व्हील्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड वी कैन यूज़ व्हील्स फॉर मेनी पर्पस. नाउ बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ. Early humans were hunter-gatherers. They had to go to search the jungle in search of food. They turned and hunted animals and gathered wild fruits and berries when they were hungry. Hunting was not safe. There was time when they too got killed by animals. When the food at one place was not available anymore, they moved to another place in search of food. After eating the fruits and berries, the early human used to throw the seeds on the ground. They observed that some of the roots and seeds had sprouted and they grew into new plants. Some of the fruits or berries. This was again a discovery. Now it was not accidental. They collect these seeds again, spread them on the soft ground, and also they were happy to see that many of them had grown into plants. They so learned by experience that the seed had to be planted in a particular season as well. Now beginning of settled life. Early men, they spend a nomad life. They are only wandering here and there. They cannot stay at a one place. They cannot live at a one place because they don't know anything. But slowly they can invention many things. They discover, you can say, they start to making a weapon. They can use the different items to make a weapon. After then they discover the fire. So after discovering the fire, they cook the food. But before discovering the fire, they eat only raw material. Because they don't know how to cook the food. But slowly they discover the fire, so they can use to cook the food also. After that, they also discover some different type of thing. They also invention the wheel.
They can invent the wheel, they can discover the wheel, and these wheels are used for making for the different type of different things they can discover it. So after discovering the wheel, wheels are used for many purposes. So many uses of wheel you can say that. So these are some discoveries which are done by the early men. And now the next changes, the next discovery, or you can say the next change come in the early man's life is they can start to live a settled life. Before living the settled life, in the long years ago, early men only moving here and there. They cannot stay at a one place. And why they are moving one place to another place? For searching the food, because early men don't know how to grow the crops. So for searching of food, the early men move one place to another place. One place to another place, but now some changes are also come in the life of the early men. Now after discovering of wheel, they start to live a settled life. But how? Now one day early men eat fruits, berries, these type of thing which they are found in the jungle. They can eat it, and after they can throw their seeds on the ground. They can use the fruits to eat, they can use the berries, but after eating these type of thing, they can throw their seeds on the ground. But one day early men observed that some roots and seeds had sprouted and they grew into a new plants of some berries and fruit. And now this was the change, this was the invention, again invention in the life of the early man. Spread them in a soft ground, and after some time they had grown a new, these seeds are grown into a plants. So early men also learned by experience that the seed had to be planted in a particular season as well. And now in this way early men start to living a settled life, because they also learn how to grow the crops. When they grow a crops, so they can start to live at a one place, and now in this way they can start to live a settled life. अर्ली मैन भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसके लाइफ में चेंजेस आए। उन्होंने वेपन्स की खोज की, नए नए तरीके के वेपन्स बनाए। वेपन्स बनाने के बाद से उन्होंने फायर की डिस्कवरी की। फायर डिस्कवरी करने के बाद से उन्होंने व्हील की डिस्कवरी की। व्हील डिस्कवर करने के बाद से एक चेंज उनके लाइफ में और आया कि अब वो एक जगह रहने लगे थे। पहले अर्ली मैन एक जगह नहीं रहता था, क्योंकि उसे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ता था। लेकिन वो कैसे एक जगह रहने लगे? अर्ली मैन क्या होता था, जो जंगलों से फ्रूट बेरीज मिलते थे उनको खाते थे। खाने के बाद उनका बीज जो है फेंक देते थे। एक बार उन्होंने देखा कि उन्होंने जहाँ पे भी बीज फेंका हुआ है वहाँ पे कुछ पौधे निकल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी वो फल या जो भी खाते थे बेरीज या फ्रूट्स, उसके बीज उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे एक ज़मीन के टुकड़े पे बो दिया। और कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा उस बीज से जो है नए नए पौधे निकल के आ रहे हैं। और इस तरह उन्होंने मतलब उनको ज्ञान हुआ कि अगर हम बीजों को इकट्ठा करके उनको कहीं किसी मैदान के टुकड़े में या किसी बड़े से मैदान में अगर उसको बो देंगे तो उससे जो है जिस चीज़ का वो बीज होगा वही चीज़ जो है उस पेड़ पौधे में लगेगी। और इसके लिए हमें कहीं जो है इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब वो एक जगह पे रहेंगे। अगर उन्होंने किसी भी फसल को उगाया या किसी भी चीज़ को उगा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें एक जगह रहना होगा। इधर उधर घूमने से वो चीज़ों का नहीं उगा सकेंगे। और इस तरह अर्ली मैन ने जो है एक सेटल लाइफ मतलब एक जगह पर रहकर जीना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि किसी भी चीज़ का उत्पादन खेतों में कैसे किया जा सकता है। और अब वो क्या हो गया, अब वो
एक जगह, अब वो भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं घूमते थे, अब वहीं पे रहकर उन्होंने जो है खेती करना शुरू कर दिया ना। Learning to grow crops was a big achievement. Can you guess what is meant for them? Now the early humans did not have to go to the jungle to gather food. For hunter-gatherers, they become food producers. They did not have to put their life in danger. They could not eat what they liked and not what they could find in the jungle. They did not need to roam around. In fact, they had to settle down at a one place to take care of their plants and protect them from animals. It was the beginning of settled life. Early humans also realized that water was needed to grow more crops. They therefore start living near water bodies like river and lake. Now, after learning men know, when early men know about how to grow the crops, how to grow a crop, so there are so many changes come in the life of the early men. Which type of changes? Now, firstly, early men move one place to another place for searching of food. But now, when early men learn how to grow crops, so they can start to growing a crops also. So now early men from hunter-gatherer, they became a food producer. Firstly, early men for their to another, from one jungle to other jungle for searching their food. But now in these time, early men learned how to grow a crop. So the early men became hunter-gatherer. Early men from hunter-gatherers, they became a food producer. Except this, they are place for searching their food item. So they cannot save with the wild animal. But now when early men learn how to grow a crop, they can save their life with the danger, because they do not move one to another for searching of the food. They can stay early men. And now early men also start a living at a one place, because they grow a crops. They start to growing of crops, so they can take care of their plant. So the early men start to living. Type of changes come in the life of the early men. And early men also settle near the river lake. Why? Because water. Water is used for irrigation. Early men started to grow a crop. Early men start to grow a crop. So they need a water, because without water they cannot grow the crops. And water is also used in our daily life. So the early men start to living near the river only. अर्ली मैन ने जब खेती करना शुरू कर दिया तो बहुत से उनके जीवन में चेंजेस आए। कैसा? पहले भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, अब उन्होंने क्या किया, खेतों में खुद ही अनाज उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह से वो हंटर गैदर से फूड प्रोड्यूसर बन गए। पहले वो भोजन की तलाश में घूमते थे, शिकार करते थे जानवरों का या जो भी जंगल में मिल जाता था उसको लेके खाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो खुद अनाज का उत्पादन करने लगे। तो क्या हुआ, वो हंटर गैदर से फूड प्रोड्यूसर। इसके अलावा वो लोग जो है अब एक जगह पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने खेती करने लगे थे, तो खेती करना है तो घूम घूम के तो खेती होगी नहीं, इसके लिए उन्हें एक जगह पे रहना होगा, क्योंकि जो भी पौधे उन्होंने लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए, जो भी अनाज उन्होंने खेतों में बोया उसकी देखभाल करनी होगी, और देखभाल करने के लिए उन्हें एक जगह पे रहना होगा। तो अब उन्होंने क्या किया, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनकी जो लाइफ थी, पहले वो लोग भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, जिसके कारण क्या होता था, जंगली जानवरों से उनका सामना होता था। लेकिन अब वो एक जगह पे रहने लगे, कई सारे लोग मिल के एक जगह पे रहने लगे, तो इस तरह से वो अपने आप को जंगली जानवरों से भी सुरक्षित महसूस करते थे। तो इस तरह के जो है चेंजेज जो अर्ली मैन के लाइफ में हुए। और अर्ली मैन जो है रिवर और लेक के पानी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा
हमारे रोज़मर्रा के काम में भी पानी की ज़रूरत होती है, और पानी की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अर्ली मैन ने रिवर या लेक के किनारे ही बसना उचित समझा, और वो उसी के किनारे रहकर ही खेती करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि उन्हें बहुत आसानी से खेतों की सिंचाई के लिए पानी जो है नदियों से आसानी से प्राप्त हो सके। सो दीज टाइप ऑफ चेंजेस, एंड नाउ आफ्टर लर्निंग टू हाउ टू ग्रो अप क्रॉप्स, early men start to living a settled life. So student, this was all about the beginning of settled life.